We're talking about the probe into the Disha Salia's case. Clearly rattled after Disha Salia's father alleged his involvement in his daughter's murder. Former Maharashtra Minister Aditya Thackeray has tried to publicly intimidate Republic. That's right. And meanwhile, coming to his son's defense was his father, Uddhav Thackeray, the Shiv Sena UBT chief. He dismissed the charge against Aditya, saying that they would take the fight to the court. A usual statement being issued by Uddhav Thackeray once again. Here's the story. Facing likely summons from the SIT in connection with the Disha Salia, Sushant Singh Rajput double murder case, Aditya Thackeray turned his ire on Republic. Facing a direct charge of involvement in the double murder, a jittery and rattled Aditya tried to publicly intimidate Republic. After dodging the Republic's straight questions earlier in the day, करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। a scared Thackeray Jr. let his frustration out in full public glare, threatening Republic. प्लीज एक बार आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो FIR दर्ज करने की जो अभी मांग तो मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा, मैडम चलो। आदित्य आप ये से रिपब्लिक है तो आवाज बढ़ गई आपकी। This after his father and former Chief Minister Uddhav Thackeray came out in his defense. Dismissing the sensational claims made by Disha's father of his son being involved in her daughter's murder, Uddhav said they would take the fight to the court. ठीक आहे ना, देऊ द्या ना, द्या ना मग. पण हा विषय कोर्टात चाललेला आहे, द्या ना कोर्टात काय ते. ह्या विषयात काही तथ्य नाहीये. दूर दूर तक कोई असं ज्याला म्हणतो तसं काही दुरान्वयाने सुद्धा संबंध नाही. खोट्याचं जर का तुम्ही नायटा करणार असाल तर ते तुमच्यावरती बुमरँग होऊ शकेल, हेच या लोकांना मी सांगू इच्छितो. After threatening Republic, Aditya claimed there have been many attempts to defame him in the last 5 years. They've tried to, a lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. But we have exposed the government in this one session itself. Meanwhile, State Minister Nitish Rane, the primary whistleblower in the Disha case, claimed Uddhav rang up his father and BJP MP Narayan Rane pleading with him to save his son. तो उद्धव जी को अगर लगता है हम लोग सब लोग पॉलिटिकल आरोप कर रहे हैं तो फिर उन्होंने राणे साहब को क्यों फोन किया और बोला कि मेरे बेटे को बचाओ इसमें. कुछ नारायण राणे साहब को फोन किया था, एक नहीं 2 बार किया था. आपको भी 2 बेटे हैं, मेरे बेटे से कुछ हुआ रहेगा गलती तो उनको बचा लो आप. गुहार लगाई थी राणे साहब को. पूछिए राणे साहब को, राणे साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है. In a significant statement, Rane's junior cabinet colleague Yogesh Ramdas Kadam said the law was the same for all and none will be spared. जो भी ऑनरेबल कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा. As the chorus grows for a fresh probe, is Aditya Thackeray fearing arrest? बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया।